welcome to FutureServe Overseas Education Services. My name is Varda Mazhar. And my name is Arbab. Sir is currently serving as an ESL and IELTS instructor at FutureServe, and we warmly welcome you all once again. So guys, before getting into our discussion, let me share a little bit about FutureServe. So FutureServe is basically an international education advisory, and we are offering you three kinds of services. That is the career counseling, that is the international exposure, and the skills development. Under the umbrella of career counseling, what we do is we help you find your path, your way. That is to choose the best suitable discipline for you that would be helpful for you when you're pursuing your higher education from abroad, from United Kingdoms, or from United States of America, or from Canada, or from Germany, and so on and so forth. Plus, our career counselors are going to help you find the best suitable universities. They'll also share the fee structure, the eligibility criteria, and which English language proficiency test is the best fit for you. They are going to guide you through your application processes, your documentation, and your visa procedures. Guys, under the umbrella of international exposure, the most important, that is, we are going to help you teach you the lifestyle and the living standards of the people you're going to spend your life a little longer. We are going to give you the post and the pre-departure tips. We are also going to teach you how to live with the environment you're going. Okay, in the skills development, we are going to teach you, we are going to give you some professional tips, some of the professions through which you can mingle with the job market of the place you're going to experience in a short term. So guys, this is it, a little bit about FutureServe. Now let's get to our topic, and the topic we are going to discuss today is all about the conditional sentences. Yes, it's gonna be so much fun to learn something about conditional sentences from Mr. Amar Awais. Over to you, sir. In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent, who is the King of the Kings and the King of the Day of Resurrection, thank you so much, Ms. Varda, for giving me this precious chance to talk about the conditional sentences today. I would really want to talk about the conditional sentences, and I will throw light on the rules and I will display what conditional sentences are. Yeah. Basically, conditional sentences do belong from the grammatical terminologies of English grammar, and the conditional sentences are actually made to discuss and describe about the times and the time procedure, as well as the conditional sentences. Now, if I talk about the conditional sentences, it really gives the condition. For example, if I give a condition, I say that if I had money, I would have purchased a big house. Okay. So such sentence is giving me a condition that if I had money, this is the condition first. So if I have money, I would have bought a big house. Big house. So such sentences do belong from the conditional sentences, and conditional sentences are what actually made to describe the conditions and the norms and the ideas of the spokesperson. So basically it belongs from English communication, it belongs from the English grammatical structure in which the person tries to speak about the conditions he will receive in his life and the conditions what he has in his life. So we have basically four kinds of conditional sentences. Okay. In English grammar, we have four kinds of conditional sentences. They are what known as if clause as well. If clause. Yes, If the conditional clause. sentences are also known as if clause. If so clause. if I talk about if, so it is really giving me a situation, a condition. If you think on it, when you start a sentence with if, what does it mean? It is actually giving you a situation, or it is actually giving you a possibility. Yes. Right? Because the spokesperson is still in 6 and 7. The spokesperson is still in he's petrified. He is actually trying to speak about the sentences which may happen in his future. So we basically have four conditional sentences. Okay. It's zero conditional, it's first conditional, it's second conditional, and it's third conditional. Okay. So I will categorize these four conditional sentences, and I will tell you that what are these four conditional sentences and how will we be making these four conditional sentences in order to give a responsive answer. Okay. So basically the conditional sentence, as I said before, that it talks about the conditions and situations of noun. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें खरीदता. अगर ठीक है ना, ये अगर का वर्ड जो है इसको आप कंडीशनल सेंटेंस में काउंट कर सकते हैं. अच्छा. तो द वेरी फर्स्ट इज दिस जीरो कंडीशनल. जब आपके पास जीरो कंडीशनल आता है तो आप क्या करते हो मैडम? यू एक्चुअली ट्राई टू कनेक्ट द आइडियाज
Now, Okay. how will you be connecting the ideas? Now, here in this sentence, I will again throw light on the tenses. Okay. That tenses are very important when you make the conditional sentences. If you try to make the conditional sentences and if you do not have any idea about the tenses and the tenses procedures, you will never be able to make the conditional sentences. Why? Because the conditional sentences are the combination of the tenses. Okay. And if you go deep into the tenses, I have already explained in my previous lectures that the auxiliary verbs were also very important. Yeah. So here in the conditional sentence, we will discuss about the tenses as well as the auxiliary verbs, like the way they are connected with each other, they Yeah. are joined with each other, and Exactly. then an opinion is presented in front Yeah. of people. So that is why the conditional sentence relies on the tenses, as well as it is very important for the spokesperson to discuss about the conditional sentences. Right. Because in some particular occasions, I cannot make a sentence without the help of the conditional sentences. Yeah. For example, if you come towards me and if you say that, hey buddy, you do not have a good cell phone, what do you do with it? So I'll give an answer that if I had money, I would have bought a very good and expensive cell phone. Yeah. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ले लेता. यही रीजन है कि ये सेंटेंसेस कंडीशनल सेंटेंसेस हमें बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं कम्युनिकेशन में. ठीक है, तो अब ये देखें जीरो कंडीशनल, first conditional, second conditional, and third conditional. Yeah. I will come gradually and I will tell you what conditional sentences are and how will you be making the sentences. But just to make sure, you have to put the words in your brain, you have to be so cautious, and you really have to be so, I would say, excited to make the sentences accordingly. Okay. So, zero conditional sentence जो है, it is the combination of simple present tense versus simple present tense. सही है. समझ आ रही है मैडम? Present and versus simple present. सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्सेस सिंपल Simple प्रेजेंट present टेंस. tense. अब ये दो सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो सेंटेंसेस को जो है ना, आप अगर आपस में मिला देते हो, ठीक है. the zero conditional sentences always talk about the things that are always true, True. like a scientific fact, like a universal truth. Yeah. सही है, like the things which are always true. Yeah. For example, if I give you a very simple and easy example, if you boil the water on 100 degree, it boils. ठीक है? If you struggle and work hard, you win the match. तो आपने सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट दोनों को क्या किया? कंबाइन कर दिया. तो जब आप सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट को कंबाइन करते हो तो आपका जीरो कंडीशनल बन जाता है. अच्छा, जीरो कंडीशनल यानी सिंपल प्रेजेंट वर्सेस सिंपल प्रेजेंट दोनों को कनेक्ट किया तो हमारा जीरो कंडीशनल बन जीरो गया. कंडीशनल ठीक बन, हो इसको गया. इसीलिए जीरो कंडीशनल कहा जाता है क्योंकि Zero. दोनों सेम टेंसेस हैं. सही हो गया. परफेक्ट. मतलब ये एक सेंटेंस का कहानी का पहला रुख और कहानी का दूसरा रुख दोनों सिंपल प्रेजेंट में जुड़े हुए हैं. ठीक हो गया. इसीलिए इसको जीरो कंडीशनल कहा जाता है. लेकिन इसके अंदर इफ जरूर है. If है. याद रखना, तमाम के तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ जरूर होगा. ओके. ठीक है? Alright. If you boil the egg on 100 degrees, it boils. It boils, right. It boils. Simple present. Yeah. So this is the zero conditional. Yeah. अब आते हैं first conditional की तरफ. Okay. First conditional sentence जो है, it is the combination of simple present versus simple future. Simple present versus Simple future. present versus simple future. If you give me money, I will buy a car. I will buy the car. Yeah. ठीक है? Simple If future. I receive the money, I will buy the car. If ठीक I है. receive the money, I will buy the car. अब Interesting. the first conditional sentence जो है, it is actually used to talk about the possibilities in present as well as in future. The first conditional, madam, it talks about the possibilities in present as well as in future. In the future. If you give me money, this is also a possibility. I will buy a car, it is also a possibility. So these possibilities are interrelated with each other. Yeah. True that. तब जाकर जो है जनाब क्या होगा, आपका फर्स्ट कंडीशनल बनेगा. लेकिन इसमें भी इफ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी है. हद से ज्यादा, right. So yeah, मतलब if is it only if or we can use ना सिर्फ इफ, इसको कहते हैं इफ क्लॉज है. if clause. जी, you will use if clause. अब बात आ गई सेकंड कंडीशनल की. अब जब आप सेकंड कंडीशनल की बात करते हो तो आप if प्लस सिंपल पास्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट पे आप डिस्कस करते हो. Simple. If simple past versus simple present, this is going to be the second condition. ठीक है. Simple ठीक है? past, simple present. Yeah, simple past versus simple present. Like, you Yeah. know, they are actually going to talk about the imaginary situations in present or future. Such It is actually going to talk about the imaginary situations in present and in future. Now you're actually going to talk about the words in it. Now let me give you a very simple and easy example. If I had passed the examination, I may have traveled to my village.
if I had Pass. passed my examination, ठीक I है. may have traveled to my village. To my village. सही. If Past the and present. if the company had worked hard, it may have earned a big amount of money. तो आपने इस सेंटेंस को जो है ना मैडम आपने बड़ा गौर से देखना होता है. यू हैव टू गो सो डीपर एंड डीपर एंड डीपर, तब जाके जो है ना आपका एक मीनिंग जो है ना वो आकर बनता है सेंटेंस के ऊपर. तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशनल. नाउ लेट अस कम टुवर्ड्स द थर्ड कंडीशनल. इट इज ऑल अबाउट द पास्ट परफेक्ट plus present conditional. It's going to talk about the the third conditional is actually going to talk about the past perfect and the present conditional sentences. Now the present conditional, like simple present, if I'm not wrong, right? So you will say use, like it uses in the result of present and past, like you use such sentence as a result of present and past. For example, if I had received my salary, I would have purchased some clothes for me. सेकंड कंडीशनल में मैं था. आई वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, आई वुड बाय. इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ सेल फोन. इट वाज द सेकंड कंडीशनल. जो थर्ड कंडीशनल है इसमें आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी लगेगी. यानी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाते हैं, इसको फ्यूचर में आप इसको डिफाइन करते हैं. मतलब फ्यूचर में हम विल लगाते हैं ना, तो आप विल को काट के वुड लगा दोगे. तो आप कहोगे थर्ड कंडीशनल, इफ आई हैड मनी आई वुड हैव टेकन द वर्ल्ड टूर. आई वुड हैव टेकन, अगर मेरे पास होता तो मैं दुनिया का सफर करने निकल चुका होता. सो सच सेंटेंसेस जो हैं इनका एक बहुत अहम किरदार होता है कम्युनिकेशन स्किल्स में. और ये जो है कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. अब पॉजिटिव सेंटेंस भी बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंस भी. इफ आई डिड नॉट हैव मनी आई वुड नॉट हैव ट्रैवल्ड अराउंड द वर्ल्ड. समझ आ रही? अगर मेरे पास पैसे ना होते तो मैं ना जाता. मतलब पैसे हैं तो मैं गया हूं. मतलब पैसे हैं तो मैं गया हूं. अगर ना होता तो ना जाता. एग्जैक्टली. सच सेंटेंसेस जो हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस में इसका काम होता है. प्लस जो है ये आइल्स की एकेडमिक राइटिंग में भी इसका बड़ा काम है. अच्छा, आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ऐसा टॉपिक मिल गया, इफ यू हैव अ टॉपिक व्हिच यू हैव टू आंसर विद इन 40 मिनट्स एंड यू हैव टू राइट अराउंड 250 वर्ड्स, यू हैव टू वर्क ऑन द कंडीशनल सेंटेंसेस बिकॉज यू कैन यूज द सेंटेंसेस, द कंडीशनल सेंटेंसेस, स्पेशली द थर्ड कंडीशनल, which is a very powerful sentence, a very powerful conditional sentence. So you have to look on the powerful third conditional sentence which can really give you a fruitful result. कैसे मिलेगा उसको आपका रिजल्ट देखें. आपको फॉर एग्जांपल एक टॉपिक दे दिया जाता है पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है. तो आप पॉल्यूशन के अंदर इफ क्लॉज लगा सकते हो. इफ द गवर्नमेंट हैड वर्कड टू इरेडिकेट द पॉल्यूशन इन माय कंट्री वुड हैव फिनिश्ड. ठीक है ना. तो आप कुछ इस तरह से एक सेंटेंस को आप एक अमली जामा पहनाकर उसको आप अपने सेंटेंस में, अपने वर्ड्स में, अपने ऐसे में अमली शक्ल, अमली जामा पहनाकर आप उसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यही रीज़न है आज के दिन यहाँ पर सेशन करने का मकसद ही यही था, ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि यार जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल, ये तो हो गया बहुत ईजी है. लाइक इट इज़ अराउंड द टॉपिक ऑफ ओनली 15 to 20 मिनट्स. लेकिन इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने इसका इस्तेमाल करना है. आपने इसके इस्तेमाल पे जो है ना अपने आप को समझाना है कि यार मैंने किस जगह पे फर्स्ट यूज़ करना है, किसी जगह पे मैंने सेकंड यूज़ करना है, किसी जगह पे थर्ड यूज़ करना है. मैंने ऑलरेडी इसकी डेफिनेशंस दे दी हैं. देखें, फर्स्ट कंडीशनल का क्या था, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ. ठीक है. फर्स्ट कंडीशनल का क्या था, इट टॉक्स अबाउट द पॉसिबिलिटीज. सेकंड कंडीशनल क्या था, इट टॉक्स अबाउट द इमेजिनरी सिचुएशंस. जो थर्ड कंडीशनल था, मैंने क्या कहा था, इसने कहा था कि द इमेजिन सिचुएशंस इन द पास्ट, द इमेजिनरी सिचुएशंस इन द पास्ट, इमेजिनरी सिचुएशंस इन द पास्ट. तो ये जो है ना इनकी डेफिनेशंस हो गई. एंड देन लेटर ऑन द स्टूडेंट्स कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड रेक्टिफाई द वर्ड्स एज वेल एज दे कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम मी. आई एम हियर ऑन द स्क्रीन. I'm just holding the cell phone in my hand and I want the students to text me if they have any queries, any question, anything regarding this stuff today. So I think this is enough from my side. I have briefly explained the zero conditional, the first conditional, the second conditional, as well as the third conditional. So if you have any question, you can ask, and if there isn't any question, I will request my students to have questions from me. I'm receiving online. Yeah, please come up with your questions. We are live. We are here to help you, to guide you, and we definitely will answer each and every question of yours. अच्छा, the important thing that we have discussed today is about the conditional, the if clause, जैसा कि सर ने हमें बताया है. So बच्चों, बात फिर से वहीं पर आ जाती है कि practice makes the man perfect.
चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत इजी लगती हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स आपको तब पता चलता है कि उसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आप कहाँ पे स्टक हो सकते हो, आपको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. सो I definitely would recommend you all to visit FutureServe Overseas Education Services so that you can meet Mr. Amarabhai, so that you can take classes with him, and he definitely will be teaching you in such a way कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, बिकॉज हमारा जो है वो फोकस इस चीज़ पर है. हमारा पर्पज़ ये है कि आपकी हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं ईच एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिलेटिंग टू इंग्लिश लैंग्वेज, everything that is related to grammar, because अभी तक के सेशन से आप लोग इतना तो जान गए हैं कि grammar is very very important for us to understand, to learn. So the conditional sentences, like sir has already told us that it is important for you in IELTS as well. So please फोकस ऑन दीज थिंग्स जो सुनने में आसान है लेकिन करने में थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, जो करने में थोड़ी सी हमें इम्पॉसिबल समटाइम्स लगती हैं, हम स्टक हो जाते हैं. एंड बिलीव मी ऐसा होता है. व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग समथिंग आप स्टक होते हो. एंड नेवर फॉरगेट एवरी फेलियर इज़ एन ऑप्शन कि आप कुछ लर्न कर रहे हो. अगर आपको किसी चीज़ में मुश्किल हो रही है तो इट मीन्स दैट यू आर लर्निंग, एंड व्हेन यू आर लर्निंग इट मीन्स दैट यू आर पॉलिशिंग योरसेल्फ फॉर द गुड, फॉर द बेटर. Isn't it, sir? Exactly, madam. ऐसे ही Yeah. है. So guys, बिल्कुल if you ऐसे have ही any है. questions, come up, hurry up. We have not that much time. We're running out of time. So हमें बहुत खुशी होगी अगर आप लोगों को कोई questions है, because your feedback, your comments, your appreciation, your questions means a lot to us, and we definitely are waiting for you people. अच्छा, अमजद का मैसेज आया. अमजद, I think he's my friend, the dentist. Sir, it is really nice to see you on the screen. Kindly make some strategies to discuss about the direct and indirect narrations. Okay, Perfect. Mr. Amjad, Zarur, inshallah. Inshallah. I will make a plan and I will discuss the direct and indirect narration. Thank you so much for giving me this precious idea. So inshallah I will work on it. Okay. Bakht Zaman says, sir, assalamu alaikum. Walaikum assalam. He says, sir, मैं मर्दान से हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, मुझे आइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए. ठीक है माय डियर, आप आ सकते हैं, आप मेरी तरफ आ सकते हैं, आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, हमारे काउंसलर से मिल सकते हैं. हमारा ऑफिस की जो लोकेशन है वो भी आपको मैडम थोड़ी देर में बता देगी इंशाल्लाह. तो आप ज़रूर आएँ हमारी तरफ. जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेरीज हैं, वो हम कंप्लीट कर लेंगे. अच्छा, इसके अलावा एक बात मैं दूसरी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो सेशंस मैं करता हूँ, इस सेशंस को करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं स्क्रीन पर आऊँ और आपके सामने डिस्कस करूँ, आपके सामने बातें करूँ. ठीक है, दैट इज़ समथिंग एल्स, वो अपनी जगह पर. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को मुझसे कुछ फ़ायदा हो, आप लोग मुझसे कुछ सीखो, आप लोग मुझसे कुछ समझने की कोशिश करो. तो जितना बेहतर जो है आप लोग मेरे लाइव सेशंस को फॉलो करेंगे, मुझे फॉलो करेंगे, और जितना जो है आप मुझे रिस्पांस देंगे, उसी हिसाब से जो है मैं आगे चलूँगा. लाइव आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ पर आकर डिस्कशन करें, मैडम, ऐसे ही है. और हमारा मकसद ये है कि हम आपको बेहतर से बेहतर टीच करने की कोशिश करें. तो कोशिश करें कि आप हमारे लाइव सेशंस को सराहें, शेयर करें, फर्दर आगे शेयर करें, और जो आपके जहन में जो क्वेश्चंस हैं वो जो है आप हमसे एनी टाइम एनीवेयर पूछ सकते हैं. हमारा एड्रेस जो है बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है. आप जो है फेसबुक पे हमें सर्च कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप का नंबर जो है वो भी हमारे ईमेल पर मौजूद है. ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर, आप जो है हमें एज वेल एज यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारी वीडियोस जो है वहाँ पर मौजूद हैं. और इसके अलावा वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, फ्यूचर सर्व ओवरसीज एजुकेशन सर्विसेज इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल. वी आर हियर, जैसा कि हमने आपको बताया कि वी आर द इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइजरी. तो हमारा काम है आपको सिखाना. नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू. आप जितने ज़्यादा डिटर्मिन्ड होंगे, वी आर कमिटेड फॉर यू पीपल. सो गाइज, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे, सर. Should we wind up? Okay, so thank you very much everyone for watching us today. If you have any queries, if you're stuck going abroad, you can always visit FutureServe Overseas Education Services. We are available for you people from Monday to Saturday from 10 o'clock a.m. to 7 o'clock p.m. Please visit our website, that is www.fsoes.com. Our address is really very simple. It's reachable. That is Sheikh Yaseen Trade Center, 3rd floor, main Arbab Road stop. So guys, I would recommend you to visit our Facebook page regularly so that you'll never miss the chance to attend our live session. So be safe, be yourself, stay blessed, remember us in your prayers, and always remember FutureServes is here to serve you. Thank you so much.